उनने तो स्टार्ट कर लो। 35 तक रुकते हैं, 2 मिनट। अच्छा ठीक है। Hi everyone. In my last lecture, we left that DI set of time, speed, distance. So first we'll solve that and then we'll move to the next topic, which is time and work. So the DI set. Yes, this one. So and there are two set of data given here. The first one is a bar graph. Where is this? This one, where this graph shows the speed in kilometer of two persons while traveling by different vehicles. Okay? The first vehicle is car, second is bus, then train, bicycle, and on foot. And the blue line would represent person A and the orange line would represent person B. So for instance, if we are supposed to note the speed of person A in car, it was 40 kilometer per hour, and for B in car it was 30 kilometer per hour. And similarly for train, say it is 80 kilometer per hour for person A and 60 kilometer per hour for person B in train. And the next set of data, which is this is the following table shows the percentage of distance traveled by both the persons A and B by different vehicles. All right. So say the entire distance for person A was 100%, obviously. So out of these, this उन्नत, 100, एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो उन्नत, बोलिए। हाँ, देर आर टू न्यू स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि लास्ट क्लास में क्या करवाए थे, तो उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। लास्ट क्लास में तो बहुत सारा चीज था, बट ठीक है। नहीं, सिर्फ ब्रीफ कर दो ना कि किस टॉपिक पे क्लास करवाए थे, क्योंकि ये दो न्यू बच्चे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके। So in the last class, we discussed about the basic time speed distance formula, which is nothing but speed is equal to distance upon time, where this is the exact speed, this is total distance, and this is total time. Then we went on discussing average speed, the concept of average speed, then the basic conversion from meter per second to kilometer per hour and kilometer per hour to meter per second. And then we discuss the concept of relative speed in context of general relative speed between two bodies. And then there were two important points, which was the first one was
the boat and stream, where we know it's there are two concepts, upstream and downstream. And the second one was the concept of length, the concept of length when there are, say, two trains crossing each other, or one train or one bridge, or say a train crossing one pole or a man crossing one pole. So the concept of length, when does length becomes irrelevant, or when do we need to take the length into account? These were some points which we discussed, and you can go through them through your study material, and if you have any doubt, then let me know. So this second table, this one, the following table shows the percentage of distance traveled by both the persons A and B by different vehicles. So different vehicles, and this part what we are discussing, DI, this DI is nothing but an intersection or a combination, you can say, between these basic data table or data graphs and this concept which you have been learning, which is time speed distance. So say out of 100%, which is the entire data for entire distance for person A traveled 24% of this entire distance by car, 18% by bus, 27 by train, 20 by bicycle, and 11 by on foot. All right, and similar for person B. So these are some data, or a lot of data, which we have at our disposal, and we'll be referring to these now and then in accordance with the question. So the first question is, if person A travels 432 kilometer by train, then what is the total time taken by person A to travel by bus and bicycle together? Banao. आया किसी का? देखो क्या होगा फिर से, the entire set of questions, जिस भी DI set को ले लो, जिस भी K set को ले लो, it would revolve around only one formula, which is speed is equal to distance upon time. यही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा. Only this formula would be applicable to all the particular questions we have in this particular set. All right, बताओ. देखो, if person A travels 432 किलोमीटर by train, person A पहले निकालो इस पे. ये है पर्सन ए का डेटा. ठीक है, अब पर्सन ए ट्रेवल्स 432 किलोमीटर बाई ट्रेन. ट्रेन का परसेंटेज कितना था? 27%. मतलब इफ द टोटल डिस्टेंस इज से x, उसका 27% कितना हुआ? 432 किलोमीटर. अब बन जाएगा? बोलो. किसी का आया आंसर? नहीं. देखो, अगर टोटल डिस्टेंस फॉर ए हमने x लिया, तो x का 27% कितना हुआ? x का 27% इज इक्वल टू 432. ठीक है, तो दिस कैंसल्स आउट टू 16. 7 6 42. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1600
kilometer. Matlab the total distance which A was supposed to cover with all these 5 means of transport, the total distance was 1600 kilometer, and out of these 1600 kilometers he covered 432 kilometer or 27% by train. अब तुम लोग को निकालना क्या है? The total time taken by person A to travel by bus and bicycle together. ठीक है? Total time क्या होगा? If the formula is speed is equal to distance upon time, तो time क्या होगा? Distance upon speed. ठीक है? अब it is very clear कि बस और बाइसिकल का जो टोटल टाइम होगा वो इंडिविजुअली निकाल के ऐड किया जाएगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस तो तुम निकाल सकते हो इंडिविजुअली ऐड करके, बट स्पीड इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बस में ए का स्पीड वाज 45 किलोमीटर एंड बाइसिकल में ए का स्पीड वाज 25 किलोमीटर, तो टोटल स्पीड वोंट बी 45 प्लस 25. ठीक है? सो यू हैव टू फाइंड इंडिविजुअल time required to cover the particular distances and then you need to add those time. ठीक है? तो बस के लिए if the total distance is 1600 किलोमीटर, तो बस का शेयर कितना था? 18%. ठीक है? तो the distance would be nothing but 1600 into 18%. ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा टोटल डिस्टेंस 1600 इंटू 18 अपॉन 100. ठीक है? 1600 का 18%, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस अपॉन दिस इज डिस्टेंस. तो स्पीड कितना था बस में? इट वाज 45. ठीक है? तो 1600 अपॉन 45 इंटू 18 अपॉन 100, ये हो गया फॉर बस. ठीक है? और फॉर बाइसिकल सिमिलरली 1600 इंटू कितना परसेंटेज है बाइसिकल का? इट इज 20%. तो 20 अपॉन 100 अपॉन स्पीड कितना है बाइसिकल में? इट इज 25. इट इज 25. ठीक है? तो व्हेन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन व्हिच इज 1600 अपॉन 45 इंटू 18 अपॉन 100 प्लस, क्योंकि हमें टोटल टाइम चाहिए, तो प्लस 1600 अपॉन 25 इंटू 20 अपॉन 100, इट वुड बी समवेयर अराउंड 19.2 आवर्स. ठीक है? समझ में आया ये वाला? डाउट है किसी को? अनम्यूट करो और बताओ डाउट है तो. नहीं? ठीक है. अब इसका बताओ. If person B completes his journey by bus in 4 hours, then what is the total distance traveled by person B in his whole journey? बताओ. देखो इसमें there are three components in any time speed distance question, which is first time, second speed and third distance. ठीक है? अब before attempting any of the particular questions, what you need to do is see what all components are provided here. ठीक है? तो अब देखो इस पे क्या दिया है? If person A completes his journey by bus in 4 hours, मतलब टाइम दिया है. ठीक है? Then what is the total distance traveled by person B in his whole journey? Distance you need to find. ठीक है? अगर तुमने बस का डिस्टेंस निकाल लिया तो यू कैन फाइंड द टोटल डिस्टेंस, बिकॉज बस का शेयर वाज 21%. तो अगर कुछ भी नंबर है, से यू हैव 100 एंड यू नो इट इज 21% ऑफ द टोटल जर्नी, तो तुम निकाल सकते हो कि टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना था. अब देयर इज दिस कंपोनेंट स्पीड. स्पीड कहां से आएगा? तो स्पीड आएगा इस पर्टिकुलर टेबल से. दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव प्रोवाइडेड सो मच ऑफ डेटा, सो दैट यू एंड अप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ अमिड्स ऑल दीज डेटा. ठीक है? तो स्पीड कितना है पर्सन बी का बस में? पर्सन बी का बस में स्पीड था 55 किलोमीटर्स. ठीक है? तो यू हैव टाइम, you have speed and you need to find the distance. अब इक्वेशन क्या होता है? Speed into time is equal to distance. ठीक है? Speed is 55 kilometer, time is 4 hours and this would be nothing but 220 kilometers. ठीक है? तो 220 kilometers is the distance covered by person B by the means of transport which is bus. ठीक है? तो अगर 220 किलोमीटर है बस का एंड बस का शेयर was 21%, you need to keep referring to the data they have provided. All right?
ऐसा नहीं हो सकता you can find the answer in isolation from all the data provided here. नहीं, you need to keep referring to these tables or the graphs now and then. तो अगर 21% of x, which is the total distance, is nothing but 220 किलोमीटर, तो x कितना होगा? x होगा 1048 किलोमीटर्स. समझ में आया ये वाला? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करना और बताना, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस 3 कंपोनेंट होता है. डिस्टेंस निकालना था, टाइम और स्पीड दिया हुआ था, तो उससे डिस्टेंस इंडिविजुअल बस का निकला एंड इस शेयर वाले कंसेप्ट से बस से टोटल डिस्टेंस निकल गया. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. If person A traveled 242 kilometer on foot and person B traveled 625 kilometer by car, then what will be the difference between time taken by them to complete their journey by bus? बताओ, सॉल्व करो इसको. आया किसी का? Sir, I'm doing it. हम्म. देखो, जो स्टार्ट नहीं किए, मतलब अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप इज इफ पर्सन ए ट्रेवल्ड 242 किलोमीटर ऑन फुट, ठीक है, एंड पर्सन बी ट्रेवल्ड 625 बाई कार. अब तुम्हें निकालना क्या है? देखो, यू हैव इंडिविजुअल डिस्टेंसेस, ठीक है, स्कैटर्ड डेटा है तुम्हारे पास डिस्टेंस का, और 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. ठीक है? देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टाइम? तो तुम्हें टाइम निकालना है एट द एंड. स्पीड तुम्हारे पास सबका है. इनडायरेक्टली क्या निकालना है तुमको? कंप्लीट देयर जर्नी बाय बस. अगर बस का डिस्टेंस, अगर बस का टाइम निकालना है, तो यू नीड द इंडिविजुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीज टू बॉडीज बाय बस. ठीक है? और बस का कैसे आएगा? तुम्हारे पास ए का फुट का डिस्टेंस है, बी का कार का डिस्टेंस है. अब कैसे आएगा बस का? वह तभी आएगा So, व्हेन. बताओ. हाँ, so do you do distance by speed for each one separately and then find it? व्हाट डिड यू डू? I did distance by speed, that is 242 by speed on foot.
What Did good I? will that do? What good That will way you that can do? find. That way you can find the time taken to travel that distance. But you need the time taken to travel the distance, the journey by bus, and this is on foot, and this is by car. Oh, oh, so you'll have to find it for bus separately. Hmm. And to find the time taken to cover the entire Hmm. journey, to cover the journey by bus, you need the distance covered by each of the two person A and B by bus. ठीक है? अगर Okay, तुम्हें sir. बस, ठीक है, तो how would you do that? You would do that by finding the total distance which these two people need to cover. All right, person A traveled 242 kilometer on foot. All right, if this is person A and on foot the share is 11%. All right, which means if I take the total distance as x, so 11% of x would be nothing but 242 kilometers. Is this clear? Yes, sir. ठीक है, so x would be nothing but 2200. All right, 2200 kilometers. ठीक है, तो keep this aside. Now we'll do the similar thing with person B. All right, we'll find the total distance by person for person B. Now person B traveled 625 kilometer by car. All right. Now 625 kilometer by car, and for person B, the share of car is 25%, which means 25% of the total distance. Now if I take it as y is nothing but 625, which means y is nothing but 2500 kilometers. ठीक है, so now you have the total distance which A needs to cover and which B needs to cover. Now what would you do? You would find the distance which they need to cover individually by bus. And how would you do that? For person A, the share of distance traveled by bus is nothing but 18%. All right, which means 18 upon 100 into the total distance for A was 2200, which means the distance by covered by A via bus is nothing but 396 kilometers. ठीक है, समझ में आ गया इतना? Yes, sir. This is the distance, and what you need to find is the difference between time, which means indirectly you need to find the time taken by these two people, person A and person B, to cover the distance which is their individual distance by bus. ठीक है, so for A 396 is the distance which he needs to cover by bus, and while traveling in a bus, the speed for A is nothing but 45 kilometers. Again, we are done with this part of data for person A, and then we shift to this graph because it has the second component which we need, which is nothing but the speed of person A via bus, which is 396 upon 45. All right, time is nothing but distance upon speed. So this is distance and this is speed. So it is nothing but somewhere around 8.8 hours. All right, it is 8.8 hours for person A. And similarly, we'll do the similar thing with person B. Note these data down. All right, it is 8.8 hours. And for person B, the total distance was 2500 kilometer, and the share of bus in this data for person B is 21%, which means 21 upon 100 into 25 kilometers, it is nothing but 525. All right, 525, and the speed by which person B would be covering this distance is nothing but 55 kilometers. So 525 upon 55 would give us the time, because time is again nothing but distance, total distance upon upon speed, and this is nothing but 9.5 hours.
All right. So for person A, it was 8.8, and for person B, it is 9.5. Okay. So then what will be the difference between time taken by them to complete their journey by bus? So the difference is 9.5 minus 8.8. It is nothing but 0.7 hours. This is the difference or the answer which we were looking for. Clear with this particular question? Yes, sir. Perfect. Next, what is the total time taken by person A approximately, obviously, because we are dealing with speed and ratio of distances during his whole journey if he completes his journey on foot in 5.5 hours. Again, before I let you solve this particular question, I'll simplify this a bit. Again, there are three components in any time speed distance question. Okay, that is time, speed, and distance. This is the easiest way you can break down a question to be clear on as to what the question actually needs you to find and what it has provided you indirectly or directly. Okay, so this particular question, it is provided that he completes his journey on foot in 5.5 kilometers, which means time is 5.5. Okay, and we are talking about person A on foot. So the speed, we can get it from here. On foot, the speed is 10 kilometer per hour. Okay, 10 kilometer per hour. All right. So what you need to find is, again, what you need to find, there's only one component which is not provided. So directly or indirectly, at least for the first step. Now, you might be confused as to what this question is entirely about. But for the first step, you are very clear about the fact that time and speed are provided to you. So the only component which is not there in the question is this distance component on foot. All right. So first find the distance component on foot, and distance is nothing but speed into time. ठीक है, बनाओ इसको. आया आंसर? So 2.5 hours. कितना? 2.5 hours. नहीं, बिल्कुल नहीं. 8.25 भी नहीं.
आंसर किसी का आया? नहीं, देखो, this is a bit on the lengthier side of the question. First, we have been provided with the time taken by B to complete his journey by bus, which is nothing but 4 hours. ठीक है, it is 4 hours and the speed is bus and 55, so it is 55 kilometer per hour. So the distance would be nothing but 220 kilometers. ठीक है, 220 kilometers. And now what is the total distance traveled by person B in his, this was discussed I guess, so यस सर, ये वाला करना था वो। ये वाला आया आंसर इसका तुम्हारा? नहीं सर। नहीं पता था, चलो देखो, ड्यूरिंग हिज होल जर्नी इफ ही कंप्लीट्स हिज जर्नी ऑन फुट इन 5.5 आवर्स, ठीक है, 5.5 आवर्स में उसने कंप्लीट किया और उसका स्पीड कितना था? स्पीड था उसका 10 किलोमीटर पर आवर, विच इज 5.5 into 10, तो डिस्टेंस इज 55 किलोमीटर्स, ठीक है, 55 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन ए ऑन फुट। अब ऑन फुट में पर्सन ए का शेयर कितना था? अगेन रेफर टू दिस सेट ऑफ डेटा विच इज 11%, तो 11% से टोटल डिस्टेंस इज x, it is, what was this, 55, all right, so cancel out as 5, so the entire distance, the entire journey is of 500 kilometers. ठीक है, now what you need to find here is what is the total time taken by person A. अब total time कैसे आएगा? total time is total distance upon speed, ठीक है, अब speed यहाँ पे the speed is varying according to the means of transport, so you cannot just take some average speed and use this particular data, so you need to find the individual distances covered by person A by each of these 5 means of transports, and then use, which is time is equal to distance upon speed, and add the individual times, ठीक है, तो for car first say we are discussing about car, so car का शेयर कितना है? 24% है, तो 24% of 500 कितना आएगा? ये आएगा 120 किलोमीटर्स, ठीक है, 120 किलोमीटर्स आएगा ये। अब इसका 120 kilometers आ गया, what you need to find is the total time or the individual time, तो time is distance upon speed, कार में speed कितना था? 40 kilometer per hour, तो it is 120 upon 40 which is 3 hours, ठीक है, तो कार का time taken, मतलब person A while traveling by car will take 3 hours to complete its journey by car, ठीक है, अब नेक्स्ट इज बस, बनाओ बस का कितना आएगा? देखो बस का शेयर कितना है? 18%, तो 500 इंटू 18% कितना आएगा? 90 किलोमीटर। और इसका स्पीड कितना था बस में? इट इज 45, तो 90 अपॉन 45 विच इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका आ जाएगा 2 आवर्स, ठीक है, तो कार का आ गया है अभी तक 3 आवर्स, बस का है 2 आवर्स। नेक्स्ट इज ट्रेन, ट्रेन का है कितना शेयर? 27%, विच मीन्स 27% ऑफ 500 kilometers, it is nothing but 135, ठीक है, और 135 और स्पीड कितना है इसका? स्पीड इज द हाईएस्ट विच इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर आएगा 1.68 आवर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो कार का आया था 3, इसका बस से आया 2, ट्रेन से आया 1.68, अब यू आर लेफ्ट विथ बाइसिकल एंड फुट, ठीक है, फुट का यू हैव द डिस्टेंस विच इज 5.5,
मतलब टाइम विच इज 5.5, तो यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, द टाइम टेकन बाय बाइसिकल। अब बाइसिकल में उसका शेयर है 20% और टोटल डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, मतलब इट इज वेरी क्लियर कि वो डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर उसका स्पीड कितना है 25, मतलब 4 hours, ठीक है। 4 hours इज द टाइम टेकन ऑन बाइसिकल, ठीक है, टाइम टेकन ऑन बाइसिकल। अब टोटल टाइम कितना आया, 3 + 2 + 1.68 + 5.5 + 4, ये अप्रोक्सीमेटली होगा 16.2 आवर्स। समझ में आया ये वाला कैसे हुआ? बिकॉज यू हैड द टाइम, देखो इसमें तुम्हें एक ही डेटा दिया गया था विच इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट हिज जर्नी ऑन फुट। ये एक डेटा से यू वेंट ऑन फाइंडिंग आउट all the other parameters, which is the individual distance, individual time, individual speed दिया हुआ था। So only this one data enabled you to find everything else which was hidden there, ठीक है। So you need to be aware of what the question is actually asking you rather than doing it on a superficial level, ठीक है। 5.5 आवर्स था तो उससे टोटल डिस्टेंस निकला, टोटल डिस्टेंस से इंडिविजुअल डिस्टेंस निकला, इंडिविजुअल डिस्टेंस से इंडिविजुअल टाइम टेकन निकला, एंड यू ऐड ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if person B completed his journey by train in 5.75 hours, then what is the average of the distance traveled by him by car, bus and bicycle? बताओ। आया किसी का? अरे इसमें कैलकुलेशन के सिवा क्या है? देखो, जर्नी बाय ट्रेन इन 5.75 आवर्स, अगेन 3 कंपोनेंट्स होता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम तुम्हें दिया हुआ है 5.75, स्पीड है तुम्हारे पास पर्सन बी का ट्रेन में कितना है, ट्रेन में उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्स्ट स्टेप ऑफ योर्स वुड बी टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन बी वाया ट्रेन, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम,
speed is 60, time is 5.75, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 345 किलोमीटर्स। ठीक है, अब 345 किलोमीटर आ गया। अब व्हाट यू नीड टू फाइंड द नेक्स्ट इज द एवरेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम बाय कार, बस एंड बाइसिकल। तो अगर तुम्हें बाकी के इंडिविजुअल डिस्टेंसेस निकालने हैं जो इस डेटा से आएगा, एंड दिस डेटा रेफर्स टू द टोटल डिस्टेंस, उसके परसेंटेज से ये सारा निकलता है। तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। अब देखो, ट्रेन से इसने 345 किलोमीटर ट्रैवल किया और पर्सन बी का ट्रेन का शेयर कितना था, 23%, विच मीन्स इफ आई टेक टोटल डिस्टेंस एज डी, उसका 23% इज 345 किलोमीटर्स। ठीक है, तो डी इज 1500 किलोमीटर्स। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस आ गया तुम्हारा 1500 किलोमीटर। अब निकल जाएगा इंडिविजुअल कार, बस और बाइसिकल से। कार का क्या होगा? कार का शेयर कितना है? कार का शेयर है 25%, विच मीन्स 25% इंटू तुम्हारा टोटल डिस्टेंस था 1500, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 375 किलोमीटर। बस से कितना आएगा? बस का शेयर कितना है? 21%, विच मीन्स 21% इंटू 1500, ये आ जाएगा तुम्हारा 315 किलोमीटर्स। और लास्ट क्या बचा तुम्हारा? बाइसिकल। बाइसिकल का शेयर कितना है? 16%, तो 16% इंटू 1500, ये आ जाएगा तुम्हारा 240 किलोमीटर्स। ठीक है, अब क्या निकालना है तुमको? तुम्हारे पास तीन डेटा आ चुका है, 240, 375 एंड 315 किलोमीटर। तुम्हें निकालना है एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इज द सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सम इज 375 प्लस 315 प्लस 240, नंबर ऑफ टर्म्स इज नथिंग बट 3, तो ये कितना आ जाएगा? आंसर वुड बी 310 किलोमीटर्स। तो ये है तुम्हारा एवरेज ऑफ व्हाट वाज ट्रैवल्ड बाय पर्सन बी बाय कार, बस एंड बाइसिकल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो देखो, ये वाला तो सेट हो गया। इसमें डाउट है किसी को? डाउट है कुछ? नहीं? चलो देखो, नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत ज्यादा अभी आज नहीं हो पाएगा, तो वी वुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो, बेसिक्स आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, एंड तुम लोग जाना अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उससे एक बार पढ़ के देखना, एंड नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बेसिक व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम एंड वर्क, तो उसमें देयर इज वन कॉमन फ्रेज। ठीक है, देयर इज वन कॉमन फ्रेज कि इफ से अ पर्सन X does some work W in say D days, ठीक है, तो what is the efficiency, what is the ratio of work done in one day? Yeah, they might be couple this question with another person which might be Y, उसके अलग set of data होगा। ठीक है, तो when we talk about all these, there are three or two important points which you need to be aware of. The first is work is a function of time in this chapter. ठीक है, and vice versa, मतलब work and time would be work would be a function of time. ठीक है, तो when you denote work you can denote it other way around by time. ठीक है, कैसे होगा? देखो, if I say a person completes a particular work W in 4 days, ठीक है, अब ये 4 days हो गया तुम्हारा टाइम। अब अगर मुझे 4 टाइम के फंक्शन में वर्क को डिनोट करना है,
तो इसका वाइस वर्सा लिया जाता है कि इफ से अ वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड इन 4 days, तो एक दिन में कितना कंप्लीट हो रहा है वर्क से W है, उसे 4 दिन लग रहा है पूरा कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा? 1/4। हाँ, एक दिन में होगा 1/4। अगेन, क्योंकि ये वाला पॉइंट आया है, तो in this chapter you would face a lot of questions जिसमें तुम्हें a work is being completed in 20 days, 30 days. तो it is better if you solve a lot of questions and you are aware of the approximate value of fractions such as 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30. ये सारे जो fractions होते हैं, they will feature very frequently in the questions, ठीक है? क्योंकि a work can be completed in 5 days, 10 days, जब भी ऐसे statements रहेंगे तो you need to take the reciprocal of that particular number. So you need to be aware of the approximate value of 1/5, 1/10, 1/15 and so on. ठीक है? And you can't do so by just memorizing the values. You need to solve the questions with a greater intensity. ठीक है? अब next is the concept of efficiency. ठीक है? The next is the concept of efficiency. अब efficiency क्या होता है? Efficiency is work done upon time taken. ठीक है? Efficiency is obviously work done upon time taken, because how do you say if a person A is more efficient than person B? How would you do that? You would give both of them a similar piece of work W and see which one completes that work faster. Say A completes the same work in 10 days and B completes the same work in 15 days. So who is more efficient in this particular question? A, obviously. ठीक है? Because efficiency is equal to work upon time taken. ठीक है? तो when we say work upon time taken is equal to efficiency, so it can be concluded that efficiency is inversely proportional to time taken. ठीक है? This is the another relation you need to be aware of. जहां पे तुम्हें टाइम दिया गया होगा, तो efficiency तुम कैसे डिनोट करोगे? टाइम का रेसिप्रोकल. अब efficiency निकालते कैसे? देखो, if I say A can complete a piece of work in 10 days, ठीक है? And B can complete the same piece of work in 20 days. तो find the efficiency of A and B individually. बताओ. बताओ कितना आया? एफिशिएंसी तो निकालना था, W अपॉन T. बोलो, क्योंकि यहाँ पे W नहीं दिया हुआ है, तो you are getting confused. So where W is not specified, we take it as 1 for the sake of our convenience. ठीक है? For the sake of our convenience. और
एफिशिएंसी या टेक इट एज 100. अब देखो 100/10 एंड 100/20, ये कितना आ गया? ये आ गया 10%, ये आ गया 20%. ठीक है, तो whenever you need to find the efficiency factor, either take W as 1 or W as 100. ठीक है, अब से a person completes a particular work in say 40 days, तो efficiency कितना होगा? It would be 100/40, so this would be 2.5%. ठीक है, समझ में आ गया ये वाला कि एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? समझ में आया? व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज नथिंग बट द वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, चलो, तो बाकी जो भी टाइम एंड वर्क का थ्योरी है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इफ वी स्टार्ट डिस्कसिंग देम इट वुड not be the correct thing to disrupt the flow. So we'll start this with a fresh class. ठीक है, चलो, okay then let's end this session.